today we have another example based on JavaScript interview questions. Okay, so the today's interview questions are based on event loop, how the event loop works. Okay, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, एक टाइम आउट फंक्शन दिया है जो कि 0 मिली सेकेंड पे स्टार्ट होगा. ओके फाइन. फिर मेरे पास क्या एक प्रॉमिस दिया हुआ है. इस प्रॉमिस के अंदर हमने एक और टाइम आउट कॉल किया है एंड एक और प्रॉमिस एक्सटर्नल है एंड फिर देन हमारे पास नॉन एसिंक्रोनस काइंड ऑफ ऑपरेशंस है. अब देखते हैं इनका आउटपुट क्या आएगा. तो मेक श्योर यू ट्राई फर्स्ट योर अप्रोच देन विल गो. ऑल्सो आई हैव एडेड फ्यू चेक्स हियर लाइक कि क्या होते हैं. यू कैन गो like you can search for these particular topics, what are macro queue and what are micro queues, because these are important interview questions. I'll make another video on that particular topic, but for now we'll focus on the question. Fine. So as usual, non-asynchronous operations first. So start slash end, then since timeout hai, okay, so what actually timeout is? Timeout, if you are given a function between timeout and promises, always the promise will first execute, then the timeout will start. ठीक है. तो टाइम आउट है, अभी इसको बाद में देखेंगे. नेक्स्ट प्रॉमिस. सो आवर आउटपुट विल प्रॉमिस वन. सो प्रॉमिस वन हमको प्रिंट हो जाएगा. देन विल हैव अनदर प्रॉमिस एज अ प्रॉमिस टू. नाउ आफ्टर द promises are over, then go for time out, but in a sequence, like whatever the first time out was there, go for first then second, like in a queue manner. Okay, so the first time out will be this time out 1, because always the micros get executed first, after that the macros get start in that particular order. Okay, the next output will be timeout 2. Why timeout 2? Because after this promise will resolve and this timeout was already in the queue, so after this particular execution of the queue, this timeout will be started. Okay, so this is the final output of this interview problem. Let me run this problem and let's see like whether our output is matching. Yeah, you can see promise 1, promise 2, timeout 1, timeout 2. This is our expected output format. Okay, so I hope so you like this interview question, and do share, do subscribe to my channel. And